good morning to all present here. To all the distinguished guests, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, I, CA Dr. Abhishek Gandhi, And I, CS Dr. Smita Thawani, on behalf of Sir KP College of Commerce, extend a warm welcome to all to the National Conference on Managing Business Dynamics for Resilience and Sustainability, organized by IQAC and the Accounting Department of Sir KP College of Commerce. I feel extremely thrilled to have you all here to this much awaited conference, and it gives me immense pleasure to be sitting in front of you all, that is, amongst the most esteemed personalities who have either won the accolades in their respective fields or have surely made some noteworthy achievements, whereas we also have amongst us few students who are aspiring to develop their career in this so-called noble profession of ours, namely the teaching fraternity. A conference is a platform to discover, connect, and contribute. And as we begin our session today, let us join together our hearts and minds and seek the blessings of the Almighty. I request our student, Miss Lija Pradhan, to come up on the stage and guide us through. Thank you, Lija. I would now request all the dignitaries present on the stage to kindly proceed for the lighting of the lamp and inaugurate our session.
we are gathered here to exchange the ideas and open up the discussions on managing business, it is indeed a golden opportunity for each one of us to enrich and enlighten ourselves. Since we are talking or speaking about business and its resilience, I would like to share a quote of Bill Gates. I believe in innovation, and that's the way you get the innovation is to fund simply the research and then you learn the basic facts. As far as facts are concerned, to highlight few statistics about the event of today, there are almost 130 plus participants who have registered for the today's event, who are all scattered from 8 different states of our country, 20 different universities, more than 16 cities, and to add it to the top of the list, one of the participant is joining us from all the way United Kingdom, London. So in a way we can say it is an international conference, to be fair enough. To now continue with or proceed further into the session, I would now request the captain of our ship, the in-charge principal, Dr. Seema Desai ma'am, to conduct the welcome address for session. Namaste. Chief guest of this function and Honorable Vice Chancellor of Sweet Network South Gujarat University, respected Dr. Kishore Singh Chawla sir, today's keynote speaker and Honorable In-charge Vice Chancellor of Sri Govind Guru University, respected Pratap Singh Chauhan sir, President of this function and first Vice Chairman of Sarvajanik Education Society, Shri Ashish Bhai Vakil, KP LSE Chairman Shri Pratik Bhai Shroff, experts of technical sessions, Conference Secretary Professor Smriti Desai, Conference Coordinators Dr. Vinita Ben Vivala and Professor Aisha Ben Siddharth, invited principals and guests, and my staff member and dear participants. A very warm welcome to all of you on the occasion of the inauguration of National Research Seminar here at Sir KP College of Commerce, Surat. It is both an honor and a privilege for me to stand before you today as we embark on this significant academic journey. The college, which started with 181 students in 1946, is providing excellent education to more than 3,500 students in the field of commerce today. Empowerment of students of their all-round development through education is our cherished motto. The college aims to create a supportive and inclusive environment where students are encouraged to explore their potential, develop creativity, confidence, and resilience to become independent and good human beings. It is matter of pride that the college is making continuous efforts to sustain and improve the quality of the institution. As a result, the college has got accredited with the National Assessment and Accreditation Council, that is NAAC, with B++ grade in the first cycle, A grade in the second cycle, and again retained A grade in the third cycle also. The college currently holds a 3-star rating with a CGPA of 2.94 from GSIRA. As an institution of higher education, Sir KP College of Commerce has always been committed to fostering an environment where academic curiosity thrives. Our students, faculty, and research scholars are continuously demonstrated excellence in various disciplines, and this seminar is a testament of that spirit of inquiry. It is through seminars such as this that the framing national Leadership is the capacity. Leadership is the capacity to translate vision into reality. Leadership is not about holding a position of power. It is about inspiring, empowering, and serving others. I would now request Dr. Vinita Giwala, IQAC Coordinator and Head of the English Department, to introduce the chief guest of today's session, Honorable Vice Chancellor of Nirmak South Gujarat University, Dr. Kishore Singh Chawla, and also our keynote speaker, Dr. Pratap Singh Chauhan, Honorable Vice Chancellor, Sri Govind Guru University, Godhra.
Good morning, one and all. Respected dignitaries on the dais and off the dais. We are privileged to have two distinguished leaders in higher education with us today. I would like to begin with Honorable Vice Chancellor Dr. K.M. Chowda. We are deeply honored to have as our chief guest for this national conference a distinguished alumnus of this very Sir K.P. College of Commerce and a leading figure in higher education, Vice Chancellor Dr. Kishore C. Chowda. His remarkable journey from his college to the esteemed position of Vice Chancellor at Veer Narmad South Gujarat University is testament to his exceptional intellect, unwavering dedication, and profound impact on the academic landscape. Born in 1966, on 2nd March, Dr. Chowda sir began his academic career from proprietary school as higher secondary school teacher in 1989. In 1991, he was appointed as lecturer at J. Shah Arts and H.P. Desai Commerce College, Amroli, and also served as head of accountancy department. From 2005 to 2021, Sir held the position of principal, dedicating 16 years to the Amroli College. And with great pride, Sir was appointed as Vice Chancellor of Veer Narmad South Gujarat University in 2021 and in 2024 reappointed as Vice Chancellor of Narmad University for a second term. Apart from this, he held different positions: a founder president of Indian Accounting Association South Gujarat branch, center head of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, former other than Dean Commerce Faculty, chairperson Board of Sports, a good administrator. He is thorough researcher also. Under his able guideship, 26 research scholars were awarded MPhil and PhD degrees. Sir also published 22 books and 17 research papers at international, national and state level journals. Rupees 2,30,000 grant was approved by the University Grant Commission under 12th plan for minor research project. Chowda sir also visited College of India as one of the member of NEC peer team and also a member of AAA Gujarat State. He was also selected as district coordinator of Swarnim Gujarat by Commissioner of Higher Education Gujarat. Dr. Kishore C. Chowda sir also affiliated with more than 30 organizations. The most outstanding achievement Veer Narmad South Gujarat University witnessed is the first position across India in creation of ABCID with 6,05,418 students, and with great pride another diamond in the crown. And I would like to mention that Ministry of Education, New Delhi has sanctioned rupees 100 crore grant to university under PM USA initiative. Veer Narmad South Gujarat University is one of the 26 universities in the country to receive this grant. His vision and leadership have been instrumental in the progress of Veer Narmad South Gujarat University. His journey is an inspiration for all of us. Welcome, sir, in your alma mater. We are equally honored to have with us a keynote speaker, Dr. Pratap C. Chauhan, Honorable In Charge Vice Chancellor, Shri Guru Govind University, Godhra, Gujarat. Dr. Pratap C. Chauhan began his academic career as assistant professor. He was appointed as Vice Chancellor of Saurashtra University in 2018. Sir also worked as officiating Vice Chancellor of Saurashtra University from 14 to 2015. If we talk about his scholarship academic career, Sir bagged 2 gold medals for securing highest mark in marketing management and business management at university examination at MCOM level. Dr. Chauhan is a proud recipient of Best Research Paper Award for 2 times. He had a different position as resource person, keynote speaker, chaired the technical session,
at conference and seminar in India and abroad. Sir is member of Executive Committee, National Accreditation and Assessment Council from 2016 to 2019, and also member of Standing Committee, NEC, member of Board of Management, JRN Rajasthan University. Dr. Pratap C completed 5 minor and major research projects sponsored by University Grant Commission. Under his guideship, 109 research scholars awarded PhD and MPhil degrees. Presently, 5 students are pursuing PhD under his supervision. Dr. Chauhan participated in conferences organized outside India, namely Indonesia, USA, Dubai, China, Portland, UK, Mauritius, Nepal, and Canada. During his academic career, he held various positions and member of many academic bodies. Sir published 40 research papers in reputed journals and penned 14 books to his credit. We are incredibly proud of his accomplishment. We will have the privilege of listening to Dr. Pratap C. Chauhan, the in-charge Vice Chancellor of Sri Guru Govind University. We are excited to learn from his experience. Let us give both Honorable Vice Chancellor Dr. Kishore C. Chawda and the Vice Chancellor Dr. Pratap Singh Chauhan a warm welcome. Thank you very much. Thank you, Vineeta ma'am. As a gesture of love and respect to all the dignitaries who are present on the dais as well as off the dais, now we would like to honor them each one after the another. Firstly, we would all like to honor our respected Honorable Vice Chancellor Sir Dr. Kishore Singh Chawda by presenting them the memento. I would request Sri Ashish Vakil Sir, the first Vice Chairman of Sarvajanik Education Society, to kindly do the honors.
Good morning to all of you.
subjects are emerging subjects, and understanding this subject is very necessary, not only from the point of view of financial accounting, but how you can implement practically. When management wants to take advantage of certain government policies for environmental benefits, they also very much interested in know what benefit they will get financially, and for that this accounting will come into picture. At the same time, cyber security. Now more and more financial transactions are done on online mode. See, cyber security is very important to safeguard our interest. Another one is artificial intelligence. This technology affects each and every sector of each and every business or profession or even social life. So it is also very interesting. The theme of the conference is resilience and sustainability. If you are resilient, then you will sustain, and if you can sustain, then only you can manage your business successfully. So I think the subject and sub-themes are very carefully selected, and I wish all the best for this conference and congratulate everyone. I just wanted to thank our Honorable Vice Chancellor, who has always been helpful to all type of any academic endeavor, and especially I thank recently we had a very positive response for law college for initiating admission for the current academic year. I hope with the such a nice cooperation with BNSU, Sarvajanik Society and all colleges will grow hand to hand. Thank you very much. Thank you, sir, for such an insightful presentation. We are truly grateful for your invaluable insights. So now, as pointed out by the proceedings of the event, firstly, we would continue with the address of our keynote speaker for the today's event. But before that, I would like to specifically highlight the fact that our researchers are the future face of our country, and they do have an infinite store of energy with them in addition to the great ideas, and if they are provided with the right platform and abundant opportunities, they are likely to shine like a star. Luckily enough, in today's times, there is no dearth of opportunities which are available in various fields, be it education, be it in the entertainment sector, spirituality, science, and technology. There is always a wider scope available through which they can realize their potential to the maximum possible level. And to continue with this event itself, now we have with us Dr. Pratap Singh Chauhan sir, who will address the audience from the online mode. जी मैम हाँ हाँ कर स्क्रीन पर
So, dear friend, today I am not physically representing and your principal invited due to some medical reason. I am not directly attend the conference, but the digital mode I am here. So, first of all, Honorable Vice Chancellor Dr. Kishore Ji Gowda ji, the first Vice President of the Service Office of Vakil Pratik Saroj ji, Principal Seema Desai, IPS Coordinator, and all technical session chair, keynote speaker, learned delegates, and invited guests. Dear friend, today there are in a very different era compared to the many years. The world is very dynamic. So, the business sustainability and dynamics are play a very vital role in the business and economy. Now in 2024 and we are entering the 2025. Dear friend, the business environment we have to understand. The global GDP of the all over the world is very close to $110 trillion. It means our volume of business, including all services and products, whatever we create, that is very close to $110 trillion in the world. Out of this $110 trillion economy in the world, the US standing to the first position and very major part of the global GDP is covered by the US. Very close to a $29 trillion economy. In the last decade, the business mechanism and dynamics changed. China is also a leading country so far as the economy and GDP is concerned. China's GDP is very close to a $19 trillion economy. The earlier day, the Japan was the third largest economy, but in the 2025, Germany is securing the third largest economy in the world, very close to $4.92 trillion economy. And Japan is little bit less compared to Germany, and it is very close to a $4.5 trillion. India is the fifth largest economy, and we are very close to a $4.27 trillion economy. So means we are very close to the two economies in Japan and Germany. So it is a business dynamics change. I give you the data in 2015, where the Honorable Prime Minister has taken the charge as a Prime Minister of India, and basically Gujarati Honorable Narendra Modi. At that time, our GDP was very close to $2.1 trillion. Means we are double in the economy within the 10 years, 2015 to 2025. It means that Japan is a mature economy
but people are old age people. The US is the leading country in the world, but the mechanism and the dynamic is changed, and that's why you heard about the tariff war. On 2nd April onward, America President has introduced the reciprocal tariff war to all the countries because they are losing a very close to 8 lakh crore rupees in the all over the world. That's why they give the same tariff with the all economy, and India is not far away. After 2nd April, the world is waiting for what is going to happen in the tariff war. But they are not understanding. India has our own domestic demand very close to 90%. And within this 10-year, one decade period, our economy was a $2.2 trillion to very close to $4.27 trillion. And maybe in the next year, again it will increase and reach to $5 trillion economy. That was the dream our Honorable Prime Minister has given to our own people. Dear friend, business sustainability and dynamics is very, very important. In 2015, where we are not producing any smartphone. But now, in India, whatever we are consuming, we are using a smartphone, 96% smartphone produced in the making in India. It is a business dynamics. It is the sustainability of our business. And we are very close to $300 billion production of the smartphone and electronics goods. It means India plays a very vital role because our young people, our 65% population are very young, and our average age of India is very close to 29 years. China is the leading country, very close to $19 trillion economy, but they are age as a population is there, and China's average age of China is 38. The Japan is old age a country. So the growth rate GDP is mature. Last year it was very close to 3.2% GDP in the job. India is leading to 6.5% the GDP for 24-25. And we expecting in 25-26 is very close to a 7.2% estimation under the IMF. My dear friend, today the KP College of Commerce has decided the area for the conference is very unique and very contemporary. Because you go through the details of green accounting, the whole world is, the facing a lot of problems. So far as the environmental is concerned, the green campus is concerned, and also problem is facing everybody. So accounting profession is also the thinking about the green accounting and the behavioral finance. Behavioral finance is a factor to all over the world because it is a human is concerned. And once a human is concerned, your decision making policy, decisions affect
In fact, everything is depend upon the personal, the behavior, attitudes, like and dislike. You see in the US, Joe Biden was there in the president, then the business tariff and everything is very stable in all over the world. When the 1% is changed, and the president of America, it is the leading country in the world, out of $110 trillion economy, very close to $29 trillion economy is coming from 34 crore population of the US. So that's why the human behavior has affect and change the modality and mechanism of the business. My point is the whatever the tariff war is there, many countries come out with this struggle and fight. And my opinion is the America will suffer a lot of problems because the spare part industry is concerned, many raw material is concerned. The within a short part, America will not cope up with the situation. And the inflation and many other issues faced by the US also. Because the whole world is in a very common platform. The dynamic is changed. Holiday, the US and Europe and the developed nation and the advanced country, they are making a decision in the one center, under the one umbrella. The NATO and all these things. But you see in the last 2 years, the NATO and all the war and situation is a very different way, a moving and dynamics, and is effective to all over the world. You see the Russia and Ukraine, the war, the mechanism is changed. The Russia and America is now settled into one umbrella. The European Union, basically the France, Germany, these are the countries, the leading country in the world today, still today. It is also there after India, UK, France. They are the under the one umbrella of the European Union. It's affect your business dynamics. At the time, India has to care and concern, give a lot of freedom to our industry people, do a lot of innovation, because the patent, trademark and copyright, research and development, we are not far away. Now every year we can also, the registered patent is 130,000 per annum, but it is not sufficient. So far as the patent, copyright and trademark is concerned, China is leading in all over the world. Our population is very close to China. We have a competitive advantage of a young age people. We have a lot of young age people. Every year we have to produce a new job, a very close to 1 crore 10 lakhs every year. But mostly the data is integrated in the organized sector. Every year we replace a young people, a very close to 10 lakhs people. But basically we need a 1 crore new job in the market. Then we sustain and maintain our GDP and grow at double rate. And within the 2030, we will be the third largest economy in the world. But at the same time, we have to understand our per capita income is very close to $3,000. Whereas the UK, America, China, they are the leading countries and per capita income very, very far away from India. We have to reach $5,000 per person to $10,000, and we reach to $18 trillion economy. At that time, we are in the upper middle class country in the globe. And then we fight with the
the third largest economy, and mechanism, business mechanism is also going to change in the Viksit Bharat Act in 2047. When the India is a critical time, now we are past away. And within this 25 years, our young generation is going to old age. Our average age is 29 now, but after 25 years, it will reach to 35, 38. And at that time, the maintenance and utility service is not going to produce for the GDP. It is considered as the maintenance charge for the economy. The Japan is facing the problem. China is also facing the problem, and that's why they changed the population policy, the one-child policy, to two-child. Because the working population of the country is not available, expertise is not available. India has a competitive advantage. We have young people. We provide highly skilled people in the all over the world. Because our 65% population is below 25 age, it means give a little bit a skill-based education. And that's why our Honorable Prime Minister has given in July 2020 a new education policy, this NP 2020. It's not a new, but it's changed in the Indianization of higher education. Indianization of higher education means what is the basically need of the India. Our higher education is provide expertise in the globe. Our 2 lakh students every year move from India to the US and Europe. Every year 10 lakh students they move into the foreign country. So my point is, we have to stop the brain drain, the process in the country. And our highly skilled people work for the nation. Then we will be a leading country in the 2047 where our freedom is very close to 100 years. At that time, the dream of our Honorable Prime Minister, Viksit Bharat. A Viksit Bharat is possible because of the people work hard, and whatever the business dynamics and sustainability is there, we change according to the needs of the globe, not only localized needs. You understand we are very close to 1200 universities working in the country and 50,000 colleges like the KP Commerce College, 50,000 higher education institutes working in the country. But there is no any single institute or university in the globe. We are in the top 100 university of the globe. Very small country, Hong Kong and the Singapore, they have one or two universities in the top 100 university in the globe. So it is a big challenge for the Indian higher education. How and what way we develop and skill our students in the next 25 years. लाइव चाला है ना Because our student, our graduate is placed and employability of the placement of our graduate is 24%. Whereas in the professional course, our student marketability is 35%. It means the 65% of professional students and our overall graduate is 76% are not employable as per the needs of the industry. Many times we have interacted with the industry institution, interaction, and industry people is always saying that whatever you produce the graduate and postgraduate, and whatever we expect the skill from your graduate, they are not at the mark, they are comparable. So my point of view is, if we have to develop
And the developed nation in 2047, we have to change many things. Not only business dynamics, business sustainability, but we have to change our education. Education is based on the practical orientation, the field-based education, create a skill, highly provided skill. I'm giving the data in the IIM and IIT. The one third of the total faculty are not available still today. Our affiliated college and government college, 50% staff is not available. It means the highly skill-based trained teacher is not available in our higher education. And we do the unionization of higher education as per the demand of the India. Then we have to collaborative research work we have to do. We change our pedagogy also. We have to develop the infrastructure. Access economy, and we will be the Viksit Bharat. Whatever the dreams made by our honorable Prime Minister, it will be happen. There is no end to doubt. Only doubt is our education institute will build a skill as per the needs of the industry, organization, not stereotype. Whatever the curriculum developed by the university, we gave a lot of autonomy, lot of freedom to the higher education institution where they can develop in such a way. Basically, it is the need of the industry, need of the people, and it is comparable to a global higher education. And India will be the hub for the higher education because we have a 4 crore 32 lakh students in the UG, PG, MPhil and PhD program. It means a two-thirds of the UK population is our higher education students, including all students first standard to PG, PhD. We are very close to 25 crore students in the country. It means it's a big population compared to any population of the country. So we have a competitive advantage, competitive opportunities, how we get, how we absorb this opportunity for the nations, and that will be lead to the country. So I am thankful to Professor Kishore Singh Chavda ji, the Vice Chancellor of the South Gujarat University. He has given me the opportunity to express my feeling about the business sustainability and dynamics and how India is a lead. And I'm thankful to the principal, Seema Madam, and my student, my scholar is there in the college. So I'm thankful to Asif Bhai, Pratik Bhai, and all dignitaries coming from the different, you have given the data, 130 papers you received in the different area of accounting.
and it states 16 city. It means it is a national level seminar and one of the participants from the UK. So my best wishes to all of you. You learn, present the good things, and think out of box also. To what way we have to lead our higher education and how is useful to the country, economy and business. That we have to think a very different way, very fresh way. Otherwise, we always doing, in the last 75 years, the same way and agreeing to the others. We are the teacher, we are the leader, we are the vice chancellor. We have to take a lead without any fear. What is exact need of my students? What is the exact need of the nation? That way we have to develop our, the curriculum, structure, and higher education institute. Then we will be the midst of the Bharat. Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram. We had Dr. Pratap Singh Chauhan, Honorable Vice Chancellor of Sri Govindguru University, Godhra, who, despite not being present physically, but still he ensured that he participated in the event and not only just guide the entire audience, but at the same time motivate the researchers to contribute in some or the other manner. Thank you, sir, for your insightful presentation. We are truly grateful for sharing your valuable insights. Now, we shall hear it from a person who needs no introduction at all, especially to all those who are associated with the teaching fraternity in the state of Gujarat. Honorable Vice Chancellor Dr. Kishore Singh Charda, I request you to address the audience and share your thoughts about today's conference. એડ્રેસ મને નાખો આશીર્વાદ સત્રી નંબર હા आज हम ऐसी जगह पे नेशनल सेमिनार में बैठे हैं कि सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी ઓડિયો ન થાવ जो आज 112 साल करके ઓલું બંધ થઈ ગયું 113वां साल में अपने માસ્ટર બંધ કરો માસ્ટર નહીં હતી ઓડિયો બંધ કરો और इससे ઓડિયો आगे નાની अगर અંદર आप कैलकुलेशन में जाएंगे इस कॉलेज में बैठे हैं वो कॉलेज सर के पी कॉलेज ऑफ कॉमर्स का भाई रंजन कॉलेज ऑफ कॉमर्स इसका भी 82 इयर्स और 83 इयर्स में वो एंटर हुए तो मैं इसके बाद पहले इससे पहले शुरू होने से पहले मैं सभी अपने पार्टिसिपेट करूँगा कि सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी और सर के पी कॉलेज कॉमर्स के लिए घर खड़े होकर अब जितनी तालियां बजाए हम ज़्यादातर अब इतनी तालियां बजाए 82 इयर्स में और इसके 12 साल में सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी ने मेरे जैसे हजारों स्टूडेंट्स को किया है। आप ताली बजाइए और इसके सामने 200 साल तक सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी और इस सोसाइटी का काम है क्योंकि विकसित भारत का अगर सबको साकार करना है ऐसी कॉलेज और ऐसी इंस्टीट्यूट को हमें ही प्रोत्साहन देना है। आप आपकी जगह दे सकते हैं आज के ये सेमिनार में अभी तो यहाँ से अपने आवाज से वर्चुअल में यहाँ सीधा भी है वो मेरे गुरु भी है एंड मेरा सफर गाइड भी है तो श्री गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी इंचार्ज वाइस चांसलर डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान साहब इसी संस्था के इंचार्ज आचार्य श्री डॉक्टर सीमाबेन देसाई जी इसी संस्था के पूर्व आचार्य डॉक्टर मार्टिनाबेन अपने टेक्निकल डॉक्टर नवीन पंजाबी जी इसी कॉलेज के डॉक्टर विनीताबेन जीवाला जी डॉक्टर हितलबेन देसाई जी ऐसा सिद्धार्थ जी डॉक्टर अनुराबेन और अपनी ही सोसाइटी के अलग अलग कॉलेज से आए हुए इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर मेघनाबेन अतोरी जी और आदरणीय लॉ कॉलेज के इंचार्ज आचार्य से आदरणीय ध्यान और बाकी अपने विद्यार्थी परिवार और
बाकी पार्टिसिपेशन परिवार। मैं यहाँ कुलपति के नाते नहीं आया, क्योंकि मैं 86-88 का बैच का, मैं इसी कॉलेज का एमकॉम का मैं स्टूडेंट्स के नाते ही आया। आशीष भाई से बात कर रहा था कि तब यहाँ और आदरणीय सिद्धार्थ जी थे, एक कामिल जी थे, वो उसी डेट में। अभी तो उनकी कोई अवशेष नहीं है कि उस दिन उनको पढ़ते वो चित्रकूट पे पढ़ते थे। वो चित्रकूट के यादें, तभी यहाँ ये जब एंट्री है वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी, इसीलिए झोपड़ी को हम कहते थे कि चित्रकूट पे पढ़ना था। तभी की बात अलग थी। 86-88 में इंस्टीट्यूट अपनी तरह से स्ट्रगल करते हैं, मगर चित्रकूट में जो पढ़ना अच्छा लगता था, ऐसा भी राष्ट्र के अंदर अच्छा नहीं लगता होगा, ऐसा मुझे पता चलता है। रही बात अपनी टॉपिक की, ज़्यादा में उसमें आदरणीय चौहान साहब ने बहुत सारी चीज़ें उसमें, अगर उसके पूरे मुद्दे को अगर हम करें, एक ऐसे नहीं, एक कॉन्फ्रेंस से बात नहीं खत्म हो, जैसे 100 अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस करें अभी उसमें कम है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसमें मैं इसी इंस्टीट्यूट जो 112 साल पुरानी है, 82 साल पुरानी है, तो ये यूनिवर्सिटी के हेड के नाते 1-2 बातें मैं रखना कोशिश करूँगा। मैं कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा काम जो है बाकी सभी को अलग से प्राइवेट करने का काम है। एक जो चीज़ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आपको एकेडमिक ऑटोनॉमी दिया गया है, ऑटोनॉमी की बात नहीं कर रहा। एकेडमिक ऑटोनॉमी जो की है उसमें आप हर रोज कहते हैं अपनी मीटिंग्स में, आप ऐसा कीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स आते हैं, आप जिस एरिया में कॉलेज है, जैसे कि ये एरिया में, इसके 50 किलोमीटर्स में कितने इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज में से आपको लगे कि कॉमर्स के लिए रिलेटेड कौन बिजनेसमैन है जिसको जरूरत है स्टूडेंट्स की। और मैं कहता हूँ उनको आप बुलाइए फर्स्ट सेमेस्टर, 1 को बुलाइए, 2 को बुलाइए, 3 को बुलाइए। आप सोचिए कितने को अलग अलग क्लास में भेजना है, आप भेजिए। एक सेमेस्टर उसे भी आते रहिए, जाने दीजिए, आइए जाने दीजिए। आपका सिलेबस करिकुलम चेंज मत कीजिए, बस तब तक देखते रहिए। आप भी अंदर कभी कभी टीचर को भी कंपल्सरी बिठाया करो, जब वो एक्सपर्ट आते हैं तो पीछे, आगे नहीं, पीछे उसे आखिरी बेंच पे बिठाया करो क्लासेस में। और फिर उसके पास ऑब्जर्वेशन करो कि क्लास के अंदर कौन सा ऐसा स्टूडेंट्स है जिसके पास इससे आगे और कोई पोटेंशियल है। समझो कि 100 है या तो 150 है, जो भी है 150 है, मैं डैम श्योर कहता हूँ कि 15 बच्चे तो ऐसे होंगे ही कि जिसके पास इसी का अलग एंगल है, मगर उसे पता नहीं है। हम गुरु हैं, इसीलिए हम जैसे वो जो प्रार्थना करने वाली दीदी को भी पता, उसमें कहानी थी, जो स्टोरी थी कि गुरु को जो बाकी पूरी बातें थी, हम वैसे गुरु है कि वहाँ सबको उसको ऑब्जर्व करना है कि 15 या तो 20 या जो भी निकले, तो मिनिमम 15 तो हर हाल में निकलेगा। उसके लिए आप आपके पास 5 डिवीजन है, तो सभी को एक और डिवीजन में ट्रांसफर करें, और वहाँ उसको ट्रांसफर करके सेकंड टर्म से जो इंडस्ट्री वाले आए उसे पूछ लीजिए कि आपको क्या पढ़ाना है, उसी को कहीं आप भी पढ़ाइए। हमारा काम सिर्फ एग्जाम लेना है। ज़्यादातर हम जो सिस्टम में बैठे हैं उसमें हम टीचर के लिए ऐसी बातें कहते हैं, ज़्यादातर टीचर बैठे हैं, और मार्टिना मैडम साथ में यहाँ बड़े हुए, तो मैं कहता हूँ हर बार कि प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, अध्ययन, अध्यापन, टाइम मिले तो रिसर्च और रिटायर। मैडम को पूछ लेना, या अभी तो कंफर्म करेगी, इसे बोलूँगा प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, अध्ययन, अध्यापन, टाइम मिले तो रिसर्च, बाद में रिटायर। ऐसे ज़्यादातर टीचर बैठे, इसमें से 90% ऐसे। तो उसको अलग से करना है, तो आपको ये पूरा मूवमेंट करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भाई विकसित भारत 2047, 65% अभी यंग लीडर है, उसकी हमने वो लेना है, बाकी सब जो भी करना है, क्योंकि जब मास होता है, मास के अंदर ये करना मुश्किल रहता है। अगर उसमें से आप आइसोलेटेड कीजिए, और इंडस्ट्री को आप ये चाहो तो 15 का 5 इंडस्ट्री को दे दीजिए, और उसे कहे कि आपका 2, 3, 4, 5, 6 आपको ही पढ़ाना है, आप पढ़ाइए, हम आपको हिंट दे दीजिए। हम उसमें क्वेश्चन पेपर में तो निकालने में माहिर है, वैसे भी अभी मैं इंटरव्यू दे रहा था, हम हर साल में 90,000 क्वेश्चन पेपर निकाल के बच्चों को देते हैं। 90,000 एक कम नंबर नहीं है, और हम निकालेंगे, और क्या करते हैं। तो
उसके कोई प्रॉब्लम नहीं, 90,000 निकालते हैं तो 1 लाख पेपर निकालेंगे। वो काम उनको मत दीजिए, क्योंकि वो काम हमारा है। तो इवेल्यूएशन हम करेंगे, क्योंकि वो पूरा कंटेंट उसके पास, इसीलिए ज़्यादा कोई हमको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। दूसरा, उसी को यही फ्रीडम दे दी कि आप जो पढ़ाते हैं, एक वीक पढ़ा रहे, एक महीना पढ़ाइए, एक वीक उसी जो आपकी इंडस्ट्री में ले जाइए उसे। एक वीक पढ़ाइए, एक वीक आपकी इंडस्ट्री में ले जाइए, सीधा मत पढ़ाइए। एक वीक पढ़ाइए, एक महीने उसको प्रैक्टिकल करने दीजिए। प्रैक्टिकल मार्क जो रखना है, अभी तो हम 50-50 भी अलाउ है, सब कुछ है ना। ऐसे मास्टर डिग्री में भी आप कर सकते हो, फर्स्ट सेमिस्टर में भी चूज कर लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक। दूसरी चीज, आप हर हाल में टीचर को सोचना पड़ेगा, वो जो आखिर में आप जो भी प्रेजेंटेशन, जो भी प्रैक्टिकल, जो भी आखिरी सेमिस्टर में करवाते हैं, उनका मॉडल चेंज करने के लिए सोचिए। ब्यूरोक्रेसी आपको इजी नहीं करने देगी, ब्यूरोक्रेसी जो इजी नहीं करने देगी। पूरी सिस्टम रहती है कि जो भी डीन होते हैं वो सभी सिस्टम में डीन वो वैसे आखिरी पड़ाव में पहुंचे होते हैं, लास्ट 5 इयर्स में होते हैं, मतलब लास्ट 10 ईयर में होते हैं। तो जल्दी आपको झुकने नहीं देंगे, मगर आपको झुकाना है तो आपके वाणी से उसको झुकाना है। झुकाना क्या, मैंने हर रोज ऐसे करेंगे, आप जरूर कीजिए। अगर बच्चा 7 यानी 6 सेमिस्टर में या तो 4 सेमिस्टर में प्रैक्टिकल में जाता है, तो उसे समझो कि एक बार उसको 9 वीक का उसके लिए, ऐसे ही मानता कि 12 वीक का एक सेमिस्टर होता है। 12 वीक में 9 वीक जो होता है उसका ज़्यादातर डिजर्टेशन, प्रैक्टिकल, जो भी चीज़ हमें अलग अलग सिस्टम में अलग अलग रहते हैं, वो आखिरी सेमिस्टर में करते हैं। मैंने उनको चेंज किया। चेंज क्या कर सकते हो, आप उसको 5 सेमिस्टर में कीजिए, 6 सेमिस्टर में पढ़ाइए। आपको ज़्यादा नहीं करना है, वेकेशन के बाद जो आप 12 वीक पढ़ा रहे हो 5 सेमिस्टर में, उसको चेंज करके 5 सेमिस्टर में आप पहले ही 9 वीक के लिए उसे भेज दीजिए कि आप जो प्रैक्टिकल करना चाहे वो करके आइए। बाकी जो 3 वीक निकलता है, वो 3 वीक में आप उसकी जो भी रिसर्च करके आया उसके बारे में आप 1 to 1 उसे सुनिए 3 वीक तक। और 3 वीक सुनने के बाद उसे जो भी इवेल्यूएशन करना है आप कर लीजिए, ऐसे पूरा सेमिस्टर। और 3 वीक का जो सिलेबस बाकी था वो लास्ट सेमिस्टर में ट्रांसफर कर दिया। यानी आपका पीसी का जो 9 वीक का सेमिस्टर गया वो आगे गया। इससे फायदा क्या होगा सिस्टम में, हम जानते हैं काफ़ी मोर देन 20,000 ईयर स्टूडेंट्स आर इन बीकॉम। तो वो स्टूडेंट्स को, 20,000 स्टूडेंट्स को 7 वीक का वैकेशन आता है। वैसे भी कुछ नहीं करता, अभी जिसकी एग्जाम खत्म होती है उसको पता होता है कि उसके बाद वो क्या करता है, वो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। उसके कारण इसकी जिम्मेदारी नहीं हमारी भी है। और कम से कम वो 7 वीक का वैसे फ्री है, वो 7 वीक और ये 9 वीक, यानी वो 9 वीक में जो प्रैक्टिकल करता है वो 9+7 में जो अगर करेगा तो डेफिनेट श्योर जो 16 वीक में, तो 9 वीक में करता है, इससे ज़्यादा एक कम से कम 1% तो वो अच्छा कुछ करेगा। और दूसरा, जो 4th सेमिस्टर के बाद या तो 2nd सेमिस्टर के बाद को जो समर वेकेशन में जो बुराइयां लेके अपने घर में आता है, उसमें भी कमी होती है। जो भी वेकेशन में बुराइयां लेके ही ज़्यादातर, चाहे मेरे बच्चे या आपके बच्चे, वो जो 7 डेज में क्या क्या करते हैं हम सबको पता है। अगर वो बुराइयां भी कम करनी है, अपनी यंग जनरेशन के पास काम भी करवाना है तो कीजिए। दूसरी एक चीज़ में हर बार कोशिश करता, हम लोग में किया था, नहीं कर पा रहा हूँ। एक दूसरी चीज़ है, आप जब फर्स्ट सेमिस्टर में आता है तब उसे ऑब्जर्व कीजिए। ज़्यादातर वो 4 घंटे का सवाल है, इससे ज़्यादा तो ये कॉलेज के अंदर मैं नहीं मानता हूँ कि ज़्यादातर साइंस को छोड़ के 4 घंटे से ज़्यादा वो रेगुलर लेते हैं। हम जानते हैं 4 घंटे से अगर कंटिन्यूस लेक्चर हो तो 4 घंटे में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे में वो निपट जाता है। और समझो उसका 12 घंटे की उसकी नींद छोड़ दीजिए, तो वो 12 और ये 5 17 हुआ, तो आपके पास 7 घंटा बाकी है। 7 घंटे के लिए मुझे हर रोज आपकी नज़दीक की स्थिति में उसे जॉब पे भेज दीजिए 7 घंटे के लिए। जो 7 घंटे आता है उसके लिए 7 घंटे के लिए भेजिए, संडे को भी भेजिए। वो बताता है ना कि मेरे पास टी का प्रॉब्लम है, टी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर वो पर डे 7 घंटा कहीं ना कहीं काम पे जाएगा, अपनी ऑफिस टाइम में नहीं, अपना एजुकेशन खत्म करने के बाद, तो उनका इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, उसकी पढ़ाई में जो गंभीरता आनी चाहिए, जो सीरियसनेस, वो भी आएगा। ये 2 चीज़ हम ही कर सकते हैं। यानी जितने भी टीचर्स हैं अपने पास मोर देन 3,000 फैकल्टी है, आपके माध्यम से सभी जगह यही कहते हैं कि
3000 फैकल्टी को आप समझाइए, तो पर डे स्टूडेंट को पहले 1 महीना पढ़ाइए, कोई बात नहीं, हर दिन पढ़ाइए। और पढ़ाई के बाद उसे ये भी कीजिए कि आपको 7 घंटा काम करना है, चलो मैं आपके लिए काम कुछ न कुछ ढूंढता हूँ, सबके लिए काम मिल जाएगा। सूरत ऐसा सिटी है, कैसे आपको अगर कोई काम करना चाहे, काम के पीछे नहीं पागल हो और काम करने के लिए पागल हो, तो किसी को काम नहीं मिलेगा, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अमरोली में वो कोशिश की थी कि 100 स्टूडेंट्स थे जो हर साल में काम लेता, और आशीष भाई उसको रेमुनेशन जो मैं देता था, तो भरत भाई भी वो बताएंगे कि मैं 1 घंटे का 10 रुपीज उसको रिम्यूनेशन देता था, ज़्यादा नहीं देता, 10, 12, 14, 15, 20, बस खत्म। आप उसको इसी तरह से कोशिश कीजिए कि आप आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा कीजिए कि आपके इंस्टीट्यूट में बहुत सारे काम निकलते हैं, लाइब्रेरी में निकलता है, बहुत सारी इसमें लिस्टिंग में जाए, तो आप उसी को ऐसे ही कीजिए कि वह अनवाइज लर्न, जैसे अपने भी स्टूडेंट्स तो विदेश में जाते हैं तो वो यही करते हैं, 4 घंटा 5 घंटा जो भी उनकी पढ़ाई हो, मुझे इसमें फर्क नहीं देखता, तो वो पर डे 6 to 8 घंटा वो इसी तरह कहीं ना कहीं वो काम करता है और इसी में से वो भी निकालता है, और कभी कभी अच्छा लगे तो अपने पेरेंट्स के लिए भी भेजता है। तो वो मॉडल आपको सिखाना पड़ेगा, नहीं तो हर दिन क्लास के अंदर इश्यू होता है। हर सेमेस्टर के बाद जो भी प्रिंसिपल बनते हैं उसको पता होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने के बाद सेकंड सेमेस्टर में सेकंड टर्म शुरू होती है, सेकंड टर्म शुरू होते ही मेरे पास फी का पैसा नहीं है, इसके बारे में बहुत सारा हंगामा सभी के लिए लगता है। मोर देन 2 लाख स्टूडेंट में सभी की एक ही कंप्लेन आती है, जैसे दिसंबर आता है सर मेरे पास पैसा ही नहीं है। अगर वो भी आपको निकालना है, अगर प्रिंसिपल और इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है कि भाई हमें उसको हेल्प करनी है, हमारे यहाँ ज़्यादा बच्चे आए टीके बिना नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है, हकीकत ऐसा है, उसको फर्स्ट टर्म में आप उसके लिए जॉब ढूंढ लीजिए और उसको कहिए कि आप काम करना है, इसी में से आपकी बनना है। उसी एजेंसी को कहे कि आप पैसा उनको नहीं देना है, तो देना है इसमें से आपको 80% देना है और 20% 80% तो डायरेक्ट मुझे RTGS करो, डायरेक्ट RTGS करो एक ही नंबर पे, अपना फी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे उसे डांटिए मत, डांटने के बजाय बहुत सारी इश्यू, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये बात आपके पास ही एडीपी में सब संभव है। इसीलिए कहता हूँ कि आप सिलेबस चाहे उसका प्रैक्टिकल का टाइम, उसकी जो भी टाइम है वो आप तय कीजिए। ऐसे अपने जो ऑटोमस सिस्टम जो है ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए, इसमें आपको ही नहीं कर, हम रोज कहते हैं कि सोने की जंजीर है, आपको अच्छी लगती है मगर उसमें बच्चे को कुछ नहीं मिलता। अगर बच्चे को कुछ चाहिए, उसके पेरेंट्स के कुछ चाहिए, उसके पेरेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमें ही अपने जितने भी सिलेबस है उसमें हमें ही इसका हमने एक, और इस बार हम कंफर्म कहता हूँ कि बोर्ड ऑफ स्टडी आपको सुनेगी, क्योंकि अभी जो जितनी भी बोर्ड ऑफ स्टडीज बनी है इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 50% ही एकेडमिक फैकल्टी है और 50% है उसमें ज़्यादातर पद्मश्री है, ज़्यादातर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसके पास मोर देन 1000 करोड़ का जिसके पास वॉल्यूम है। ऐसे ही लोग पूरे गुजरात के बोर्ड ऑफ स्टडी जो ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़ते हैं, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो सीधा अटैक करते हैं। जब बोर्ड ऑफ स्टडी शुरू होता है तो सीधा अटैक करते हैं कि ये नहीं चाहिए, ये क्या, इसमें क्यों नहीं कर सकते आप, वो बताइए। इसीलिए मैंने कहता है कि आप अगर, मैं आपको वही इंस्पायर करने ही आया कि आप आपके जहाँ भी हो वहाँ से आप कोशिश कीजिए सिलेबस को चेंज करने के लिए, सभी बच्चे के लिए नहीं चेंज करना। आप तय कीजिए कि बच्चा जो सब्जेक्ट का नाम भी यही रखना है, सब्जेक्ट किसी का वर्कलोड कट नहीं करना है, सब्जेक्ट का नाम भी यही रखना है, इवेल्युएशन को है आपको करना है, आपको ही करना है। इसीलिए आपको 2 चीज़ दी गई जो ज़्यादातर कॉलेज यूज़ नहीं कर रहे। इसका 2 नाम है, एक तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, दूसरा एडजंक्ट फैकल्टी। जैसे आदरणीय मार्टिना बेन है, आप उसके एडजंक्ट फैकल्टी में रख सकते हैं, और आदरणीय और कोई है जो आपकी सोसाइटी में है या तो कहीं भी हो कि जिसने अपने 15 साल से ज़्यादा किसी चीज़ में, चाहे हो सकता है कि वो अनपढ़ यानी नहीं पढ़ा हुआ है, 1 स्टैंडर्ड से लेके 6-7 स्टैंडर्ड पढ़ा, वो अपने आप में कभी भी नहीं पढ़ा, मगर वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री संभालते हो। सूरत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। अगर सूरत की इकोनॉमिकल लिस्टिंग निकालें हम जानते हैं कि टॉप 100 में ज़्यादातर आएंगे वो पढ़े लिखे नहीं है। मोर देन 50% कम पढ़े होंगे और 50% ऐसे होंगे जो पढ़े होंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए, आप उसको ही अंदर
प्रोफेसर प्रैक्टिस की तरह यूज कीजिए, उसी को क्लास के अंदर ले लीजिए। बाकी का हमारा, मैंने कहा रेगुलेशन का काम हमारा हम कर लेंगे, मगर उसको, क्योंकि आजकल बच्चे किसी की नहीं सुनते। अगर आप देखोगे आपकी भी नहीं सुनते, आपके जो भी उनके माता पिता उनको भी सुनते नहीं। अगर सुनाना है तो किसके पास सुनेगा? ऐसे जो लीडर है वो क्लास में आएंगे और बताएंगे, तो देखिए मैं नहीं पढ़ा हूँ फिर भी यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आप तो पढ़े लिखे। ऐसे बहुत सारे इंस्पायर वर्ड उसके पास होते हैं, क्योंकि वो सिलेबस के बाहर बोलेगा, सिलेबस के अंदर कुछ नहीं आएगा। और उसी को आप असाइनमेंट रखिए। असाइनमेंट जो देते हैं तो असाइनमेंट का बोर्ड और चेंज कीजिएगा, मैं सीधा दे दिया एक क्वेश्चन पेपर, ऐसा मत कीजिए। ऐसे जितने भी लेक्चर्स आते हैं तो ज़्यादा कम पढ़े हैं या इंडस्ट्री से आते हैं, सभी को मत दीजिए। आप तय कीजिए कि 15 बच्चे, वो भी पूरे क्लास को मत दीजिए। आप तय कीजिए कि 15 बच्चे जो से ध्यान से सुनते थे, तो ये उनको ही कहिए कि आप असाइनमेंट जो है, क्योंकि ये पूरी डेमोक्रेसी है, सभी को करेंगे तो पूरी सिस्टम उठाने के लिए प्रिंसिपल को कभी भी शांति से चाय नहीं पीने देंगे, बिना शुगर के भी चाय नहीं पीने देंगे। तो आप जितने भी अच्छे हैं इसमें से निकलते हैं, उसकी असाइनमेंट की स्टाइल बदलिए। बाकी आपके जो पूरे कार्यक्रम के लिए, सेमिनार के लिए मैं भी शुभेच्छा करता हूँ, पूरी सोसाइटी के लिए भी। और दूसरी, हर बार कहेंगे जो नई पीढ़ी है, नए जो फैकल्टी में ज़्यादातर बैठे हैं, इसमें से ज़्यादातर महिलाएं भी हैं फैकल्टी में, इसमें भी ज़्यादातर जिसकी आयु है लेस देन 40 साल से कम वाली ज़्यादा फैकल्टी ज़्यादा है। उसे कहना है कि आपको 2047 में आप फिजिकल भी रहोगे, कम से कम इसमें से कौन रहेगा 2047 में, उसकी मैं गारंटी दे देता, कम से कम मैं नहीं रहूँगा, मुझे कंफर्म है 2047 में। और जो इसमें से ज़्यादातर फैकल्टी जिसकी आयु 40 से कम है, वो लोग कंफर्म 2047 में रहेंगे, उनकी जनरेशन भी रहेगी। हो सकता है उसकी सेकंड जनरेशन भी आ चुकी होगी आपके घर में, या तो अपनी कॉलेज में ही आ चुकी होगी। उसको अलग तरह से आपको सोचना पड़ेगा। हमें तो जॉब मिल जाती है, हमें तो हो गई, तो मगर उन लोगों के लिए 2 टन की रोटी के लिए अगर उसको इनकम मिले, उसे ऐसा करना है तो जैसे आदरणीय कुमार साहब ने बताया, हर हाल में उसको स्किल एजुकेशन में जाना ही पड़ेगा। पेपर का नाम यही रखिए, मैं भी कहता हूँ कि पेपर का नाम हिलाते हैं तो पूरी सिस्टम हिलती है, वर्कलोड हिलाते हैं तो सब कुछ हिलता है, तो मत हिलाइए। स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रखिए, उसका नाम वही रखिए। कभी कभी बोर्ड में बोलता हूँ कि एक काम कीजिए, कि काम कीजिए आप, नाम है शब्दों के, हमारे में आता है फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट नाम ही रखिए, बाकी चेंज मत कीजिए। और फाइनल अकाउंट के चैप्टर में आप हाउ टू यूज द चैट जीपीटी, हाउ टू, बाकी की जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, उसके कार्बन क्रेडिट, वो उसका सीधा आप करिए। अब तो पहले, अब जब मैं और मार्टिना मैडम थे तो हर बार ये करता था, ये करना है तो किसी इंस्टीट्यूट के पास कंप्यूटर लैब नहीं है तो नहीं करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, टैली भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, हमारे पास लैब ही नहीं है, हमारे पास क्या है। अब तो लैब की जरूरत ही नहीं, हर 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 फैकल्टी के पास और हर स्टूडेंट के पास अपने आप में बड़ा कंप्यूटर है, जिसका नाम मोबाइल है। मोबाइल है, उसमें सब कुछ स्क्रीन खुलती है, चाहे जो चाहे वो सॉफ्टवेयर खुलता है, जो चाहे वो आप कर सकते हो, एआई है, चैट जीपीटी है, तो सब कुछ है। चैप्टर का नाम वही रखिए आप, फाइनल अकाउंट्स मत चेंज। और अंदर आप जो पढ़ा रखिएगा, पूछना आपको है, ऐसा तो नहीं कि पूछना क्या है, पूछना तो आप ही है ना, वहाँ पे पाबंदी नहीं है कि भाई आप इसी सवाल आपको पूछना पड़ेगा, ऐसा तो कभी ये डेमोक्रेसी में होगा नहीं। तो वही सवाल पूछे ना, हाउ टू यूज दैट चैट जीपीटी इन फाइनल अकाउंट्स, how to use it AI in final accounts, how to use it this that, which are the features are come in the industry, आपको वो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो धीरे धीरे बच्चे तो जानते हैं कि पिछले 5 साल से बीकॉम में, एमकॉम में, इससे पहले 2 साल से पहले साइंस में शुरू हुआ, ये लास्ट ईयर से आर्ट्स में शुरू हो गया। पहले साइंस की बारी थी, कॉमर्स की आई, फिर आर्ट्स किया, तीनों की बारी अभी आ चुकी है। इसीलिए आप, अगर आपकी रोजी रोटी आप 2047 तक अगर जॉब में सही सलामत रहना चाहते हैं, तो टॉपिक का नाम रखिए फाइनल अकाउंट, मुझे प्रॉब्लम नहीं, वर्कलोड वही का वही रखिए, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और वे ऑफ कंटेंट जो है आपको हर हाल में बना, कम से कम आपकी रोजी रोटी लिए भी आप बदलने की कोशिश कीजिए। इस बार इतनी से एक बार सभी का शुक्रिया। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच सर, आपके नवीन विचारों का आपने हमें प्रदान किया। रिसर्च कॉन्फ्रेंस को सही माने में
आपने एक बहुत बड़ा वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन दिया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं. थैंक यू सर फॉर योर मोटिवेशनल वर्ड्स. Next, as we approach towards the end of the inaugural session, I would request Professor Anuradha Madam Bakharia to kindly deliver the vote of thanks. परमात्मा को प्रणाम, मंचस्थ महानुभाव और उपस्थित अतिथियों और मेरे साथी मित्रों और डेलीगेट्स, आप सबको प्रणाम. सबसे पहले मैं परमात्मा का आभार मानती हूँ, क्योंकि उनकी ही सत्ता से यह सब कुछ हो रहा है. परमात्मा की मैं हृदयपूर्वक आभारी हूँ. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion on behalf of our college, Sir KP College of Commerce. यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज, लगन, निष्ठा और समर्पण की जो मिसाल है, हर संकट का जो तोड़ है, नेतृत्व क्षमता जिनकी बेजोड़ है, वो है हमारे मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर किशोर सिंह चावड़ा साहिब को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ. सर, आपने सबकी सोच को साकार किया है, आपने हम पर उपकार किया है. आपके आगमन से आज के कॉन्फ्रेंस को शानदार किया है, शानदार किया है. तूफानों में भी डटे हुए हैं जो रोक ना पाती जिनको कोई आंधी है, परिचय के मोहताज नहीं, हस्ती जानी पहचानी है. ऐसे आज के कार्यक्रम में ऑनलाइन उपस्थित रहकर कॉन्फ्रेंस की शोभा बढ़ाने वाले आज के कीनोट स्पीकर श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा के ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान को दिल से धन्यवाद देती हूँ. सर, आपकी गरिमामयी ऑनलाइन उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम कुछ खास हुआ है. सर, we are deeply grateful to you for your insightful presentation. Your expertise has been truly valuable to all of us. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पर पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. जिनके हौसले बुलंद है, जो कर्मनिष्ठ है, ऐसे हमारे आदरणीय सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी के फर्स्ट वाइस चेयरमैन और आज के ये इनॉग्यूरल फंक्शन के प्रेसिडेंट श्री आशीष भाई वकील एवं सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी के सेकंड वाइस चेयरमैन जो यहाँ उपस्थित नहीं, डॉक्टर किशोर भाई देसाई का हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ. सर, आपने अपने अनमोल समय से वक्त निकालकर यहाँ पधारकर कॉन्फ्रेंस की शोभा में अभिवृद्धि की है. समाज सेवा जिनकी नस नस में भरी है, ऐसे सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी सूरत के चेयरमैन श्री भरत भाई शाह एवं वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर रमेश दानी गढ़वी साहब ने कॉन्फ्रेंस की सफलता का शुभ संदेश दिया है. मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ. I would like to express our sincere gratitude to our chairman, local admission committee, Sir KP College of Commerce, Sri Pratik Bhai Shroff, and Provost of Sarvajnik University, Dr. Kiran Bhai Pandya, and Mr. Nikhil Bhai Krishna. I would like to thank respected principal, Dr. Imala Dayal, and Dr. Hemina Advayu for their gracious presence in this conference. On behalf of the college and all the attendees, I convey deep regards and hearty thanks to our esteemed chair, our retired principal, Dr. Martina Naroha, principal of Balfiwala College, Dr. Hinamil Oza,
and Dr. Naveen Punjabi sir for their invaluable contribution to the success of our event. I am also very much thankful to our in-charge principal, Dr. Seema Desai, Vice Principal, Professor Smriti Desai, and IPSC Coordinator and Head of the English Department, Dr. Vinita Vivala. Words are not enough. Words are not enough to thank their constant guidance and support to save the conference. I am very much thankful to our head of the account department, Professor Aisha Madam, and all the committee, organizing committee members, Dr. Jignesh Tande, Dr. Bhavisbhai Baldania, Dr. Kirtibhai Vithan, Professor Bharatbhai Patel, Dr. Hetal Desa, Dr. Madhurin Patel, Dr. Nini Harjan, and all the registration committee members for their constant efforts and support. My sincere thanks to all the delegates for your online and offline participation and enthusiasm. A special thanks also goes to Dr. Abhishek sir, Dr. Smita Khawani madam for their tireless efforts, I repeat, for their tireless efforts in making this event a success. I am also grateful to all our faculty colleagues, non-teaching staff members, and peon staff for their hard work and dedication. The warmth and support from the whole staff have been incredible. I cannot thank everyone enough for the involvement they have shown and the willingness they have expressed for a resounding success. In case I have mentioned the name of any person, I beg apology for the same. Thank you once again to everyone for making this conference a memorable one. Have a wonderful day. आप आए तो पहाड़ों ने लुटाई खुशबू आप आए तो पहाड़ों ने लुटाई खुशबू फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू फिर से एक बार धन्यवाद और जय हिंद Thank you, Anuradha ma'am, for such a wonderful and elaborative vote of thanks. And right at this point, I would like to welcome the expert, one of the experts of today's technical session, Dr. Hina Oza Madam. Better late than never. We are very happy to have you, ma'am, here. I request Professor Aisha Siddharth Madam to honor Hina Madam. Thank you, Aisha ma'am. So with this, we hereby conclude the inaugural session. And before I conclude, I'll just end up with a funny quote from Scott Fitzgerald. No grand idea was ever born in a conference, but a lot of foolish ideas have actually died there. Finally, the participants are requested to proceed towards the delicious and the tasty lunch downstairs. And before that, I'll just make an announcement. The technical session shall begin at 1 o'clock in the respective venues, the list of which we have already shared in the WhatsApp groups. So kindly just ensure that you be present on time so that we can also conclude the event according to that. Thank you. Let us all now move forward to the staff room side for the lunch. Thank you. Olha, o mundo é bem, né? Ok, bom.